Next is idea of band structure. First we talk about energy level. Energy level for isolated atom, molecules and for solid formation. Let's say this is the isolated atom and this is outer orbital in which electrons are revolved. Okay, so energy level of this isolated atoms is discrete energy level. Let's say this is ground state E1, E2, E3 and E4 and so on up to infinity. Isolated atoms having discrete energy level and there is a forbidden gap between these two levels. Okay, when two atoms come close to each other, so the resulting wave function of electron is affected. Okay, अब electron influenced by neighboring nuclei, so due to which potential energy change, total energy is the sum of potential and kinetic, so energy level change, energy level change, we can say energy is perturbed. Due to this perturbation, energy level is split and shift. Due to this perturbation, energy level is split and shift अब जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा दैट इज E1 के करस्पॉन्डिंग वी गट टू एनर्जीज, वन just above E1 and second just below E1. E2 के corresponding we get two levels, E3 के and so on up to an infinity तक, E2 E3. okay, जब a number of atom come close to together form a solid, then their outer orbit, we can say electronic wave function is influenced by neighboring atoms, so that potential energy get change जिस वजह से टोटल एनर्जी परटर्ब होगी. we can say that is small perturbation by the neighboring nuclei. So energy level is shifting and splitting. Energy level is shifting and splitting. और इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे इन केस ऑफ सॉलिड दैट इज वेरी लार्ज, दैट इज 6.02 1 मोल की अगर बात करें इन द रेंज ऑफ 10⁻23. सो वी गेट 23 लाइन्स इंस्टेड ऑफ 1 line. okay, these lines are closely spaced lines. Then we can say we got continuous line, and continuous line form band. So in case of solid we get band of energy instead of single lines. E1 के corresponding, that is E2 के corresponding, this band is correspond to E3, and each band contains a number of line. अवगाड्रो नंबर के जितने लाइंस कंटेन करेगा वी गेट बैंड.
of energy, E1, E2 bands, E3 and so on. Now idea of band structure. Our topic is idea of band structure. इसमें पहला आता है binding forces. Binding forces. As we know, electrons having discrete energy level, electron having discrete energy level, and solid having electron of solid having range या फिर बैंड ऑफ एनर्जीज, बैंड ऑफ एनर्जी. सो अब डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैविंग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन आइसोलेटेड एटम. इन आइसोलेटेड एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके तो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है. ठीक है, लेट्स सी दिस इज द आइसोलेटेड एटम एंड energy level diagram is as discrete levels and having forbidden gap also. But in solid we get bands. This is the solid. When atom come close to each other and overlapping of orbital is occur, so we get band structure. Okay, so instead of single lines we having a range of lines, that is band. Reason behind this band is that when atoms come close to each other, their electronic wave functions overlap. अब जो इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेबरिंग एटम, नेबरिंग न्यूक्लियाई, सो दैट इट्स ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी टर्म इज चेंज. उसका जो ओवरऑल वेव फंक्शन चेंज होता है जिस वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, देन टोटल एनर्जी गेट चेंज, गेट परटर्ब वी कैन से. सो shifting and splitting of energy level, splitting of energy levels. So we get a band of lines. Okay, next is energy band. Energy band जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स की जो ओवरलैपिंग होती है वो सिमेट्रिक भी हो सकती है और एंटी सिमेट्रिक भी. हम मान लेते हैं दीज आर दी एटॉमिक ऑर्बिटल. दिस इज द psi1 and this is the psi2 atomic orbitals of two isolated atoms. Isolated atoms. दिस इज psi1 एंड psi2. अगर इन दोनों की सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन होगा देन वी गेट बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज दिस टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्डिंग ऑर्बिटल. बॉन्डिंग ऑर्बिटल. एंड अगर इनकी एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन या ओवरलैपिंग होती है देन वी गेट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लेवल. दिस द फॉर्मेशन इज लाइक दिस, इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. Okay, so this is wave function for isolated atoms के जो ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है दैट इज दिस.
अगर सिमेट्रिक बॉन्डिंग होगी उनकी, ओवरलैपिंग होंगी, देन वी गेट बॉन्डिंग ऑर्बिटल. अगर एंटी सिमेट्रिक ओवरलैपिंग होती है देन वी गेट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ओके, नाउ we have to determine energy level for bonding and anti-bonding orbital. Energy level for bonding and anti-bonding orbital. As when atoms come close, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उस पर सेकेंड न्यूक्लियर का भी इफेक्ट होगा, ड्यू टू विच पोटेंशियल एनर्जी गेट लोअर, and we know electron probability density is higher for bonding orbital, जब ये इन्फ्लुएंस होगा, इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्ट बाय सेकेंड न्यूक्लियर या नेबरिंग न्यूक्लियाई, देन potential energy gets lower, due to which splitting of energy level is occur. Energy level is occur in two level, that is lower bonding energy level, and higher anti-bonding energy level. This is due to lower bonding energy level we get crystal. This is due to lower bonding energy level we get crystal formation.